आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट वाइवा में आपको आंसर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक वेब एप्लीकेशन का एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आंसर कैसे करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है। ये मेरे एक स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन जर्नलिंग। तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले एक्स्ट्रा, जब भी आप प्रोजेक्ट वाइवा के लिए जाते हैं तो प्लीज फॉर्मली आप ड्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। अपना ब्लैक बुक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी अगर पेजेस में आपको लगता है कि मिस्टेक है तो वो रेक्टिफाई कर लेना बहुत अच्छा है। और अगर फिर भी अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर को लगा कि नहीं, आपके प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक्स है, तो आप वहां पर एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मिस्टेक्स है, एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो सेम 6 का प्रोजेक्ट होगा उसमें आप वो इम्प्रूव कर लेंगे। तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होगा कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट टाइटल। सो हाउ यू विल आंसर, माय प्रोजेक्ट टाइटल इज ऑनलाइन जर्नलिंग. It is done under the guidance of Mrs. Pushpa Mahapatro, Assistant Professor in the Department of Information Technology. फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड, व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक एक करके बताती हूँ। यस। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है तो वो आप प्लीज इसमें इंक्लूड कीजिए। जैसे अगर आपने कोई ग्रेट लर्निंग से कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर आपने कहीं यूडेमी से कोई कोर्स किया है, तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक्सटर्नल के ऊपर कि हाँ रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्टडी की, उसके लिए आपने जो भी रिलेटेड कोर्सेस है वो सब कंप्लीट किया। और यहाँ पर आप ब्लैक बुक में सर्टिफिकेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ अगर स्पोकन ट्यूटोरियल के कोर्सेस किए तो वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें। ये देखिए, यूडेमी का कोर्सेस है, कोई भी कोर्स आपने जो किया होगा रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, आप उसको इधर इंक्लूड कर लीजिए। अब बेसिकली आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि इन शॉर्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो एक कोई भी एक्सटर्नल आपको यही पूछेगा कि आप एक इन ब्रीफ में अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कीजिए। तो व्हाट विल बी योर आंसर, दैट दिस प्रोजेक्ट इज अ ऑनलाइन journaling app that will actually help the people in understanding their own mental health. Okay, because nowadays lots of problems of depressions are happening. India is the second largest country in depression. Almost 30% of the youth is under depression. So how to understand whether a person is under depression or not, so for that this project has been designed. And what देन यू कैन बेसिकली एक्सप्लेन कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी ये सब क्या है। तो एक के बाद एक क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर्स। ओके, तो मैं पहला ये लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये आपको इंडेक्स पेजेस बराबर से डिजाइन करना है। अब आगे आपका इंट्रोडक्शन। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, तो आपने कुछ जो बैकग्राउंड स्टडी की होगी उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इस प्रोजेक्ट में क्या बैकग्राउंड स्टडी है कि हैविंग अ मेंटल डिसऑर्डर इजंट इजी, it is harder for someone to overcome it. What happens is people themselves, they don't know that they are going under depression, they are having some mental health issues. So for that purpose this project is designed so that people can track their own mental health. Now what is journaling? Journaling is basically we are doing it not from today but from centuries, where we used to purchase a diary and we used to write our what is happening in our day-to-day life. Okay, but that day-to-day life, when we read it again and again, then we come to know that sometimes we are having problems, sometimes we are happy, sometimes we are sad. So automatically our mental health is the well-being of our mental health, that is being discovered from our journaling. Now what is happening nowadays, we don't have time to write. Okay, that's the biggest problem. So in this particular project
what is done is there is a mobile app in which you can actually click and select the options that you want to write in your diary. So it is very useful because it will take just 1 or 2 minutes every day to click and store your day-to-day activities. Okay, so that is the main objective behind this project. Now, what's the purpose, scope, and applicability? Definitely, it will be asked that have you done the feasibility study? Is there any app, similar apps available in the Play Store? So yes, then you can explain that yes, Play Store में app हो सकते हैं, but this type of journaling app, online journaling app, that is not there. And when we are writing or when we are clicking on the buttons, then actually we are also the entire day's activities we are recording in this app. So it gives a lot of relaxation, and sometimes we also come to know that where we felt good, where we felt bad, did we eat properly or not, did we have enough of water or not in the entire day. And then when we read it after a month, then we come to know that yes, we need to improve on our health. So this is the scope and applicability of the project. We have to explain operational economical feasibility study we have to do for our project. Like operational feasibility means it is related to human mental health development. Economic feasibility means whether the project is under budget or not. So yes, this is the app and it is freely available on, it will be freely available on Play Store. So definitely it is useful for people and they can download it for free. Okay, now survey of technologies, that is chapter number 2. So external examiner can ask that have you done the technical feasibility study and which softwares you are using. So what are the softwares used over here? One is PyCharm, Python, Canva, Google Notebook, and SQLite. So most of these softwares are freely available on internet. That is why these softwares are used. And what is the functional feasibility? So functional feasibility is how this app will be used in our day-to-day life. First, we need to write a day, that is our home page. We have to register for the first time, and every time we have to log in using the username and password. Then what we are going to do, we are going to select a particular date on which we are doing the journaling, mood and socializing tracker, worker and water intake tracker, then anger and sleep tracker, gratitude practice, and our journal data is ready, so we can log out. So these information we have to fill and then we have to log out from this app. Now the data flow diagram. So many people, external examiners, they may ask you to explain the data flow diagram. So data flow diagram is a brief explanation of what is your data stores and how the data will flow from one data store to another data store. So these are the data stores. We have a home page. We have in the home page we do registration, then there is a login, then we have to select the date and time, then what is the mood, socializing tracker, workout, how much we have done, what's the water intake for the day, anger and sleep tracker, gratitude practice. So these are the data stores and how the data is moving from one data store to another data store we have to explain. Then comes your chapter number 3, that is requirement and analysis. So in chapter number 2, apart from this, we should also put a Gantt chart we have where we are explaining the set of activities that we are doing in our project. And in chapter number 3, we have to explain the requirement and analysis. So problem definition, what is our problem definition, as I have explained, it will be there. Then requirement specification. Requirement specification क्या होता है? बेसिकली कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, वी हैव टू एक्सप्लेन कि कस्टमर का जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पर्सन्स डेटा हैज टू बी टेकन केयर ऑफ in this, and then we can rate. Okay, so basically 0 to 3 ka rating hai, 0 being none and 3 being the most. So in this way we can give the rating. Okay, now planning and scheduling. Now this is a Gantt chart. We are using it for planning and scheduling.
तो इसमें क्या करना है आपको, हर एक सेल को ग्रीन कर दो. इट शोज दैट यू हैव प्लान एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड द एक्टिविटी एज पर द प्लान. जैसे सर्वे ऑफ लिटरेचर, ये आपका आइडिया फाइनलाइजेशन वीक 1 में करना था आपको, आपने किया. फिर सर्वे ऑफ लिटरेचर ये आपने वीक 2 और वीक 3 में किया. तो ये आप एक एक्सेल शीट पे बना के ऐसे बॉक्सेस को ग्रीन कर सकते हो. ग्रीन मीन्स कि हमने प्लान जैसा किया था वैसे ही हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया. तो इट इज वेरी सिंपल. फिर आता है कि एग्जामिनर में आस्क यू कि आपने कौन सा मॉडल यूज किया, सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए आपने कौन सा मॉडल यूज किया. तो आप 2 मॉडल तो इजीली बोल सकते हो, एक है वाटरफॉल और दूसरा है प्रोटोटाइप. तो यहाँ पे पहले वाटरफॉल मॉडल दिया हुआ है. वाटरफॉल मॉडल क्या है कि इसमें रिक्वायरमेंट, डिजाइन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, रिव्यू, ये सब जो स्टेप्स है ये सेमेस्टर 5 में करने हैं. फिर इम्प्लीमेंटेशन आपका सेमेस्टर 6 में आएगा. तो सेमेस्टर 6 में आपका इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट, ये सारे स्टेजेस आ जाएंगे. बट इनिशियल सेमेस्टर 5 में आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग एंड रिव्यू करना है. तो ये जो स्टेप्स है ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आप ये प्रोजेक्ट में कैसे करने वाले हो. तो अभी मैंने मेरे प्रोजेक्ट में सपोज ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया. तो अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप कैसे करने वाले हो, आपको एक एज ग्रुप को टारगेट करना है कि ये ग्रुप से ये ग्रुप के बीच में लोग ये प्रोजेक्ट यूज करने वाले हैं. तो वो जो यूजर्स है उनसे आप क्या कर सकते हो, एक सर्वे ले सकते हो. ओके, यू कैन एक्चुअली कंडक्ट अ सर्वे. तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी क्या किया हुआ है कि थोड़े से लोगों से सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया क्वेश्चंस कि आप जर्नलिंग करते हो कि नहीं. आप उसके लिए बहुत सिंपल एक गूगल फॉर्म बना लीजिए और ना अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए, या तो आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं. तो पीपल डेफिनेटली विल रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी. तो ये भी सेम ऐसे ही किया हुआ है. आप वो एक्सप्लेन कीजिए एक्सटर्नल एग्जामिनर को कि हमने एक सर्वे किया, सर्वे में हमने देखा कि कितने लोग जर्नलिंग करते हैं. तो 74% said yes, whereas 25% said that they don't have time for journaling. फिर उसके बाद आपको जो भी बेसिक क्वेश्चंस है, ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एबल टू डू द जर्नलिंग, उसके रीजंस आप कलेक्ट कर सकते हो. फिर अगर सपोज ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड में how many people are doing it with the traditional method. तो ये सारी चीजें आप एक के बाद एक एक्सटर्नल एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दीजिए. जैसे do you find traditional journaling time consuming? So many people have written yes. So it also means that कि जो भी आपको है, from where you got the motivation to develop this project, because many people don't have time for journaling. That is why we have thought that why not develop a mobile app. People will just download and use it, and it will be very easy for them to track their mental health. Okay, so this is all about the programming and scheduling and why we have taken this particular project. So in the tabular form also you can give all the responses given by the people, and make sure that the names of the people you have to keep it confidential. So no need to display the names of the people from whom you have taken the survey, and you can just list that yes, these are the responses by various people. Okay, so this is the survey result. Then comes your hardware and software requirement. Okay, so from this we will see it in the next video.